So let's make aloo poha tikki today. It's very simple. Let's take few आलूज, उनको आप बॉईल करिए और उसमें थोड़ा सा हाफ अ स्पून घी डालिए, which is very important for our kids to have. A little bit salt to the taste. And if your kid like a little spicy one, you can also add black pepper. Here I'm not adding it, but a little bit jeera powder as well. और अब हम इसमें ऐड करेंगे सोक्ड पोहा. मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है, आप इसमें थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं एंड उसकी टिक्की बना लेंगे. नाउ जस्ट ऐड दीज टिक्की टू द देसी घी and my tikkis are absolutely ready. I have added oregano and boiled chana to make it a complete nutrition meal for my kid. Enjoy!